Students, welcome to my channel. Let's do art and craft activity today. Okay, the topic is origami of a bunny rabbit. So let's start. Follow the instructions as you are shown. सबसे पहले आप triangle fold करोगे. So let's do triangle fold. Fold the top and the bottom corners to the center line. Press along the crease. अच्छी से press करो ताकि वो फोल्ड वेरी नीटली आए. नाउ ओपन एंड गेट द सेंटर फोल्ड. आपको सेंटर फोल्ड दिख रहा है? हाँ. नाउ फोल्ड द राइट कॉर्नर्स एज आई एम शोइंग. यू विल फोल्ड इट टू द सेंटर लाइन. देखो आपको ट्रायंगल फोल्ड मिल रहा है. सेंटर लाइन तक आप लाओगे उसको. अब दूसरी तरफ से भी आप फोल्ड करोगे और उसको सेंटर लाइन पर लेके आओगे. एक कोन शेप तैयार हो गया है. प्रेस इट स्लोली ऑन द क्रीज. इस तरह से. ठीक है. अब आप क्या करोगे? फोल्ड द फ्लैप. जो ट्रायंगल फ्लैप आपको दिख रहा है उसको अपवर्ड्स फोल्ड करोगे इस तरह से. और एक छोटा फोल्ड आप बाहर की तरफ लेके आओगे. अगेन वन ट्रायंगल फोल्ड इन दिस मैनर. नेक्स्ट स्टेप एंड प्रेस नाइसली एट द क्रीज. Now using a scissor you are going to make at least a 6 centimeter long cut from the left corner and see like this slit you will make. अंदाज से आप एक slit मारो. It should be at least 6 centimeter long. Okay, and fold the model into half. इस तरह से आप fold करोगे. तो ये आपकी रैबिट की बॉडी तैयार हो गई है पर अभी तक कंप्लीट नहीं है. अब आपको क्या करना है? आपको 2 कॉर्नर्स जो मिल रहे हैं आफ्टर कटिंग फ्रॉम द सेंटर यू विल मेक द फोल्ड्स ऑफ द 2 कॉर्नर्स. ओके. अपवर्ड फोल्ड करोगे ताकि आपको रैबिट के ईयर्स मिल जाएं. इस तरह से आप एक फोल्ड करोगे. इट शुड लुक लाइक द रैबिट्स ईयर्स. The other side also you're going to make the fold in the same manner. See, this is the way you got the 2 ears. Press nicely at the crease. This is the way you got the 2 ears of the bunny rabbit. Now okay. Now we will make the eyes of the rabbit. On the side of the head we are going to make the eyes. दूसरी तरफ से भी हम eyes बना लेंगे. So and now we will make the nose of the rabbit. A rabbit has 2 eyes, 1 nose. The eyes are on the head. तो इस तरह से हमारा बनी रैबिट तैयार हो गया. Now we'll make the whiskers of the rabbit. Yes. The other side also you can make the whiskers. Only one side will be seen but we will do on both the sides. Okay, whichever side you want you can stick on the book. So this is children. Now we will stick the inner parts so that यहाँ पे आपको गम लगाना है और दोनों ईयर्स को आपको स्टिक करना है. Like this, and the inner side also we will stick.
also you put Fevistick or Fevicol, whatever you have, and paste it. That's it. Now what we will do is we are going to stick this rabbit in the drawing book. तो आपको सिर्फ स्टिक नहीं करना है, आपको उसका बैकग्राउंड भी तैयार करना पड़ेगा in this manner. Can you see how I have done the background? Beautiful background. And stick the bunny rabbit. See how beautiful it looks? See how beautiful the rabbit looks, cute सा bunny rabbit दिख रहा है आपको? हाँ, इस तरह से आप बनाओगे neatly. अपने imagination से आप कोई भी आर्ट वर्क पीछे दिखाओ. It's not necessary what I have done. You are going to do the same. You do as per your wish, as per your imagination, and then stick the article. Okay? But that's not all, children. Now, since you have learned to make a rabbit, why not frame some few sentences on a rabbit? Okay, so let's frame few sentences with the help of keywords which I give you. You will learn to form a composition on a rabbit. So let's start. Now since you have learned to make a rabbit, let's learn to frame a few sentences on it. I will show you how to develop a composition with the help of keywords, okay? Now the first two words given are small and ears. So can you frame a sentence with the help of these two words? Yes. All of you can see that rabbit is a small animal and ears उनके कान दिख रहे हैं, लंबे होते हैं. तो let's frame a sentence. A rabbit is a small animal with long ears. हो गया ना एक sentence तैयार? Now have a look at the other two words. The words are eyes and head. So what sentence we can form? A rabbit has two eyes on the side of its head. Can you see? The rabbit is having eyes on the side of its head. Next we have fur and body. Now let's frame sentences with the help of these two words. Rabbit has soft fur on its body. Okay. Next is legs and teeth. How many legs does a rabbit have? 4. And legs कैसे हैं? Short होते हैं, छोटे पैर हैं, so short legs. और teeth rabbits के कैसे होते हैं बच्चों? Sharp होते हैं. So we will use the word sharp teeth. Okay, so let's form the sentence. A rabbit has 4 short legs and very sharp teeth. ठीक है ना? And the next we have jump and high. बच्चों आपको पता है रैबिट्स बहुत तेज भागते हैं और बड़ी ऊंची छलांग मारते हैं, बड़ी ऊंची, और वो zigzag मैनर में भी भागते हैं. देखा होगा आपने, है ना? तो let's form a sentence. Rabbits can jump very high. The next we have graze and fields. You know children, what do rabbits eat? Rabbits eat grass and greens, that is leafy vegetables. So mostly they are found in farms and fields. और बहुत समय तक वो वहीं पे घूमते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको greens खाने मिलते हैं. So that's why we can frame the sentence. They graze in fields for long time. ठीक है ना? And the next word is burrows. That's the home of animals. So let's form a sentence. Rabbits live in burrows. Burrows कहाँ पे होते हैं बच्चों? Under the ground. The last word is cute. Rabbit is mostly tamed. यानी उनको हम as pet भी रख सकते हैं और बड़े cute दिखते हैं. So we can form a sentence. Rabbits are very cute animals. Hope you have understood how to develop a composition. As assignment, you will write an essay on a rabbit in your English notebook. Okay, class? That's all for today. Thank you. Bye.